farmers in the olden days, when the advanced technique was not there, the farmers were actually performing certain practices which were much healthier and were good also for the nature, for human beings also. Some traditional practices like how they used to preserve the seeds using wooden boxes, then inside the gourd, and by using dried leaves and all, isn't neem leaves and all. So over the years, many changes took place in the villages. Okay, means earlier farmers were using this type of canals, as you can see in the picture, pond water or whatever the water, simple water sources were available in their villages. Like they used to make this type of canals also. Okay. But now the farmers, what they are doing, they have switched over to using certain kind of machines like electric motors and all. Do you know, children? अर्लियर पहले फार्मर्स लोग क्या करते थे, वो लोग जो सीड कभी भी बाजार से नहीं खरीदते थे, कंप्लीटली ऑर्गेनिक होता था, उसको स्टोर करते थे, एंड द सेम स्टोर्ड सीड्स वेर यूज्ड टू सो इन द और टू कल्टीवेट इन द नेक्स्ट ईयर. तो उनका तो उतना पैसा बच जाता था, खरीदना नहीं पड़ता था. एंड इससे ये एडवांटेज होता था, वन ऑफ द मेजर एडवांटेज फॉर आउट ऑफ इट वाज, यू नो व्हाट, कि जो स्टोर्ड सीड से प्लांट उगता था, क्रॉप्स उगता था, दे वर कंप्लीटली हेल्दी एंड द प्रोडक्ट्स वर टेस्टी, हेल्दी, एंड also they were consuming less of water. बहुत कम पानी में अच्छा क्रॉप प्रोडक्शन होता था बहुत पहले. But now, as the farmers have got switched over to buying the seeds from the market, आजकल farmers क्या करते हैं, seed store नहीं करते हैं. ट्रेडिशनल मेथड कंप्लीटली खत्म हो गया है ना, एक्सेप्ट फॉर फ्यू छोटे छोटे फार्मर्स के अलावा. तो क्या करते हैं, सीड स्टोर नहीं करते, तो क्या करते हैं वो लोग, अल्टीमेटली दे हैव टू गो टू द मार्केट्स टू बाय बिग अमाउंट ऑफ सीड्स. जब वो सीड्स को खरीदने जाएंगे, उसके लिए भी तो बहुत पैसा चाहिए होता है. तो हाउ दे गेट द मनी, दे विल अप्रोच टू सम बैंक्स. बैंक में जाएंगे, लोन लेंगे, कर्जे में डूब जाते हैं, डेब्ट्स में डूब जाते हैं उसके बाद. एंड द सीड्स विच दे आर बाइंग फ्रॉम द मार्केट, कुछ लोग बोलते हैं वाओ दिस आर गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स, हाइब्रिड्स है. बट पता है असली में क्या होता है, सम में भी गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स, बट मेजॉरिटी ऑफ द सीड्स दो दे आर हाइब्रिड, दे नीड मच ऑफ वाटर, है ना. जो किसान लोग खरीद के लाने लग गए ना सीड्स बाजार से, उनको ग्रोथ के लिए, प्लांट क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बहुत पानी की जरूरत पड़ती थी. So as a result, they had to plant water motors. Water motors starts only when you have electricity, है ना. इलेक्ट्रिसिटी के मदद से ही आप इलेक्ट्रिक मोटर को चला सकते हैं. एंड इट इज अ काइंड ऑफ बोरिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द अंडरग्राउंड. So you are wasting electricity also, and you are sucking the water which is there under the ground, and too much of water is needed. ना बहुत पानी की जरूरत पड़ती है. So as a result what has happened, एक तो बैंक में जाके already लोन लिया because they have to buy the seeds. Second, इलेक्ट्रिक मोटर खरीदना पड़ा, उसके लिए भी लोन लिया, है ना. थर्ड, इलेक्ट्रिक मोटर स्टार्ट किया, फॉर दैट दे हैड टू यूज इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी आने लग गया, है ना. देन फोर्थ, एज द सीड्स वेर कंज्यूमिंग मोर ऑफ वाटर, अंडरग्राउंड वाटर वाज गेटिंग लेस, ओके, बिकमिंग लेस एंड लेस. नाउ पानी का भी कमी होना शुरू हो गया. तो nowadays slowly as the traditional method got switched over to the advanced method, ना modern method of agriculture, तो कितना खराबी भी आ गया इसमें, है ना. So people found that not only one. अच्छा, और एक चीज है, earlier in the last class I have discussed, kindly turn off your mic, as I can see that some of your, one or two of your, I think so, mic is on, so that it will not be a kind of disturbance to others when I'm explaining. My dear children, turn off your mic.
Please check if anyone's mic is on, please. Okay, thank you. In the last class, I was discussing about bajra. That means millet, was telling a story कि पहले ऐसा होता था, आजकल ऐसा होता था. Now, the same bajra is telling the story. अरे, हम पहले बाजरा, wheat, हम लोगों को किसान लोग पहले इतना मतलब उगाते थे ना, production was there, means bajra, wheat, all these things. But now what these farmers are doing? आजकल फार्मर्स लोग सिर्फ वन टाइप ऑफ क्रॉप ओनली आर कल्टिवेटिंग एट अ टाइम. एक समय पे एक फील्ड में सिर्फ एक ही टाइप का क्रॉप प्रोड्यूस करेंगे. तो इससे डीमेरिट क्या है, डिसएडवांटेज क्या है? इससे डिसएडवांटेज ये है कि मैंने जैसे लास्ट क्लास में बोला था, इफ यू आर ग्रोइंग मल्टीपल क्रॉप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स इन द सेम फील्ड, different types of crops will absorb different types of nutrients. As a result, the vigority, जो एक strength होता है ना, mineral store जो होता है, mineral होता है ना soil में, एक जो ताकत होता है वो soil में रह जाता है, soil का quality खराब नहीं होता है. But if you are growing only one kind of crop at one time and again, the quality of the soil, that means vigority of the soil, will become bad. As a result, the farmers will have to use fertilizers. जब soil का quality खराब हो जाएगा तो farmers को क्या करना पड़ेगा? बाजार से फिर chemicals लाना पड़ेगा, like fertilizers and all. क्योंकि in the modern method of agriculture, the farmers are not keeping cows, buffaloes. नहीं, वो लोग cows, buffaloes नहीं रखते हैं. Instead, they started using tractors, harvest machines, sowing machines. तो एनिमल्स कहाँ चला गया? एनिमल्स को वो लोग नहीं रखते हैं. In place of animals, they took loan. They started taking loan from the bank to buy tractors, harvest machine, और पता नहीं क्या क्या मशीन खरीदना शुरू कर दिया. इसके लिए भी लोन, one loan after another loan, then third loan, fourth loan, ना इस तरह से लोन ले लेके कर्जे में डूब जाते हैं. Completely they undergoes under debt, DEBT, याद रखना. ओके, अंडर डेप्थ, कर्जे में डूब जाते हैं. बट पुराने मेथड पे क्या था? अर्लियर फार्मर्स वर नॉट यूजिंग सच मशीन्स, दे वर कीपिंग द काउज, बफेलोज. तो उनका जो गोबर होता था ना, काउ, बफेलो, तो दैट काउ डंग वर मिक्स्ड विद सम अदर हस्क और अदर वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट्स, दैट वर फॉर्म्ड इनटू फर्टिलाइजर्स. लेकिन ऑर्गेनिक वाला फर्टिलाइजर, कंप्लीटली organic fertilizer, and that organic fertilizer was again very much vital, very good for the soil. तो बाजार में पुराने किसानों को बाजार में जाना ही नहीं पड़ता था, लोन लेना ही नहीं पड़ता था, है ना. घर का सीड था, घर के गाय थे, घर का ही फर्टिलाइजर, खाद मिल जाता था. So they were not taking any loan, they were much happier. Just compare the farmers of the traditional method and then modern method, है ना. कितना चेंज हो गया. एडवांसमेंट के नाम पे लोन पे लोन, isn't it? So and whatever the seeds the farmers were buying from the market, है ना, तो that seeds were not actually that इतना guaranteed नहीं है. आपको क्या पता आपको कैसा सीड पकड़ा देंगे, है ना. तो मिक्सचर भी होता है. एंड इट्स अ वेरी ट्रू फैक्ट अबाउट दिस सीड्स व्हेन यू आर बाइंग फ्रॉम द मार्केट इज दैट दे आर हाइब्रिड सीड्स. सम सेज दैट दे आर हाइब्रिड, दे आर गुड क्वालिटी, ओके मे बी, बट मोस्ट ऑफ द सीड्स फर्स्ट तो बोल दे कि बहुत पानी लेगा, उसको बहुत पानी खर्चा होगा उसको क्रॉप बनाने में. सेकेंड थिंग इज दैट दे आर मोर प्रोन टू बी अटैक्ड बाय इंसेक्ट्स एंड पेस्ट्स. First demerit क्या है? They will consume more of water. Second demerit is they will be frequently and more prone to be attacked by insects and pests.
अब देखो, अगर आपका जो क्रॉप इतना बड़े फील्ड में एरिया में एग्रीकल्चर आप कर रहे हो, कल्टीवेशन कर रहे हो, एकदम एकदम हेक्टेयर्स एंड हेक्टेयर्स के जमीन में, अगर वहां पे इंसेक्ट और पेस्ट आपका क्रॉप खा लेगा, प्रोडक्ट खा लेगा, देन इट विल बी अ लॉस फॉर यू नो, लॉस फॉर अ फार्मर. सो व्हाट इन सच केस व्हाट द फार्मर विल डू? अब फार्मर क्या करेगा पता है? द फार्मर विल स्प्रे केमिकल्स ओवर द क्रॉप्स अदर देन फर्टिलाइजर. मतलब कौन सा केमिकल है ये? दीज आर पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, सच हार्मफुल केमिकल्स दीज आर. नाम से ही आप समझ लो, insecticides, pesticides. Insecticides are what? Chemicals which which kills insect. Pesticides means chemicals which kills pests. If a chemical can kill insects or pests, wouldn't it harm you? Definitely it will harm us. Yes, अगर कुछ केमिकल आप पूरे क्रॉप में डाल रहे हो, वो रूट में जाएगा, it will get mixed up with the soil, then along with the nutrients the root will absorb the chemical also. उसके बाद आप जो भी गोभी मटर जो भी खा रहे हो, it will have chemicals in it that will enter inside our body and we will also be harmed because of the use of artificial fertilizers, artificial chemicals, insecticides, pesticides. Even though you're controlling, okay, control कर रहे हो आप बहुत सब कुछ, paste, insects, but somewhere it is deteriorating our health, affecting our health. Yes, it is very very true. आजकल ऑर्गेनिक सब्जी मिलता ही कहाँ है? इंजेक्शन देने वाला सब्जी ज्यादा मिलता है ना? आपको पता भी होगा, इस टाइप का वीडियो वगैरह बहुत देखा भी होगा आप लोगों ने. एंड इट इज क्वाइट डिफिकल्ट नाउ डेज टू गेट ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. यहाँ तक कि ऐसा होता है कि ज्यादा सब्जी और फ्रूट खा के भी लोग ज्यादा आजकल बीमार पड़ते हैं. यस, यूरिया, थायराइड, पता नहीं क्या क्या बीमारी हो जाता है लोगों को, है ना? जस्ट बिकॉज ऑफ द कंजम्पशन ऑफ सर्टेन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स विच हैव केमिकल्स इन इट. बहुत गलत बात है, जो मॉडर्न मेथड ऑफ एग्रीकल्चर में आजकल फॉलो कर रहे हैं ये फार्मर्स, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मोर बेनिफिट. एक तो ये है, दे हैव स्टॉप्ड ग्रोइंग मल्टीपल क्रॉप्स इन द सेम फील्ड, क्योंकि उनको पूरा एक साथ कॉटन का प्लांटेशन कर देंगे, एक साथ व्हीट का प्लांटेशन कर देंगे बड़ा एरिया में, बिकॉज दे विल गेट मोर बेनिफिट आउट ऑफ इट. लेकिन उतने बेनिफिट के चक्कर में, ओके, दे आर deteriorating the quality of the soil. In exchange, means quality of soil खराब हुआ तो they are doing much of expenditure just to buy artificial seeds from the market, artificial fertilizers, pesticides, insecticides, for buying tractors, for electricity also they are paying bill because they are using electric motors, they are drawing the water from the table, underground table. कितना नुकसान हो रहा है हम लोगों को, just imagine. तो that is what is happening, you know, nowadays farmers, कुछ साल जब से ये मॉडर्नाइजेशन हुआ है एग्रीकल्चर में, तब से फार्मर्स लोगों का सुसाइड का केस भी बहुत ज्यादा हो गया है, बिकॉज दे अंडरगोज डेफ्ट आफ्टर वन डेफ्ट आफ्टर अनदर डेप्ट. मतलब कर्जा के ऊपर कर्जा ही उनका चलता रहता. इतना कर्जा होता है कि वो दे आफ्टरवर्ड दे आर समन्ड एंड उसके बाद they have no other choice, isn't it? So these are the techniques. मतलब कुछ टेक्निक्स होता है ट्रेडिशनल मेथड्स में, लोगों को टेक्निक्स ज्यादा पता था मेरे ख्याल में, क्योंकि दे वर रियरिंग एंड ब्रीडिंग द एनिमल्स एट होम. काउ हो गया, बफेलो, उसी से वो लोग, थोड़ा मेहनत ज्यादा होता था, नो प्रॉब्लम, मेहनत थोड़ा होता था, लेकिन they were tilling the soil themselves with the help of animals, sowing the seeds with themselves along with the help of animals. फिर irrigation के लिए पानी कम जरूरत पड़ता था because they were using the stored seeds by themselves, जो original organic होता था, and they were using the organic fertilizers made out of the dung, cow dung, जो animal dung से ही बनाया जाता था. तो just imagine, तो वो जो quality of वो जो fruits and vegetables रहा होगा बहुत पहले, कितना अच्छा था, completely healthier and juicy and tasty, isn't it? Which we cannot find now.
because of this advancement of modern technology. तो ये देखो डिफरेंस इन दिस बोथ द पिक्चर्स। पहले का फार्मर कितना सिंपल लाइफ, बट लोन में नहीं था, कर्जे में नहीं था, आराम से अपना जीवन जी रहा था, सिंपल लाइफ। आज का किसान बाय लक अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हो गया, अगर लक खराब रहा तो कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा, बिकॉज सीड्स खरीदने से लेकर सब कुछ पे उसको ही हैज टू पे द मनी, एंड वॉट एवर द बेनिफिट ही इज गेटिंग, उसका तो ज्यादा पोर्शन, उसका मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पोर्शन मतलब बेनिफिट ही हैज टू रीपे, ही हैज टू वेस्ट टू रीपे द लोन टू द बैंक, है ना। अब वो जितना बेनिफिट करता है, जितना उसको लाभ कमाता है, उससे ज्यादा तो उसको पे लोन चुकाने में ही चला जाता है। तो गरीब नहीं बनेगा तो क्या करेगा, इतना कर्जे में डूब जाता है। एंड समटाइम्स व्हाट हैपेंस, इवन द बैंक्स आल्सो टेल्स देम दैट वी कैन नॉट गिव यू एनी मोर लोन नाउ बिकॉज ऑलरेडी हैव टेकन सो मच। उसके बाद वो लोग ऐसे लोगों के पास जाते हैं, दलाल लोगों के पास, ऐसे लोगों के पास जहां और भी ज्यादा फंस जाते हैं, हाँ, पैसा लेकर। So just see in the first picture, this is the picture of a dump of dungs, means cow dung, buffalo, or whatever the kind of dungs, you know, this gobar jo hai, this is a very very good fertilizer, organic fertilizer. And one more I told you, aapko bola hai, this is a very very good fertilizer, organic fertilizer. And one more I told you, I think aapko bola कि 4 को बोला शायद से, this cow dung has a special property, you know, they can get rid of it has a property to eradicate insects and pest। उसके काउ डंग अगर रहता है ना, घर पे भी लिपाई पुताई करते हैं गोबर से, अगर मिट्टी का घर होता है तो इंसेक्ट्स एंड फ्लाइज एंड दिस पेस्ट कैन नॉट इजीली कम इनसाइड, थोड़ा वो होता है, साइंटिफिकली भी प्रूव किया है ये चीज। तो जस्ट इमेजिन हाउ मच गुड दिस काउ डंग कैन बी। इट इज मिक्स्ड विथ ड्राइड हस्क है, जो सूखा जो घास ये जो होता है ना, खेती का जो सूखा सूखा जो होता है, उसके साथ मिक्स करके उसको सुखा के फिर उसको फर्टिलाइजर बनाते हैं, बायोडिकम्पोज बनाते हैं। आई विल शो यू वन ऑफ द पिक्चर बायोडिकम्पोज। ओ कैसे, ठीक है, मैं आपको लाइव दिखा दूंगी, आपको स्कूल में या फोटो लेकर कुछ दिखा दूंगी। लास्ट ईयर आई शोड टू द चिल्ड्रन बिकॉज दे वर इन द स्कूल, लेकिन अभी तो दिखाना पॉसिबल नहीं होगा, पेंडेमिक के जगह हमारे स्कूल में ही है एक डिकम्पोज्ड पीट है हमारा, बायोडिग्रेडेबल पीट। हाँ, तो अभी तो दिखाना पॉसिबल नहीं, मैं वीडियो लेकर आपको दिखा दूंगी फिर भी। And in the second picture you see the farmers are spraying chemicals, expensive fertilizer, artificial fertilizer खरीदने में कितना पैसा खर्चा होता है। All these are chemicals which are completely harmful for animals, for us, whoever consumes it, जो भी खाएगा उसको हार्म होता ही है। देखो ना आजकल इंसान का जल्दी पेट खराब होगा, जल्दी बीमारी पड़ेगा, कुछ होगा, ये होगा, ऐसा होता है ना बहुत जल्दी। Yes, immunity has become decreased nowadays just because of the consumption of this type of food. तो पहले तो ये तो ऑलरेडी हैव डिस्कस दैट अर्लियर फार्मर्स वर यूजिंग दिस टाइप ऑफ वाटर कैनाल्स, कुछ ना कुछ वाटर सिस्टम था उनका आर्टिफिशियल सॉरी नेचुरली, बट नाउ बिकॉज ऑफ दिस हाई डिमांड ऑफ वाटर बाय द सीड्स फॉर इट्स ग्रोथ, they have switched over to such kind of water pump for irrigation, जो बहुत कॉस्टली होता है। एंड देखो हाई पावर पानी गिर रहा है तो कितना इलेक्ट्रिसिटी करता है, कितना पानी खर्चा होता है, टू मच ऑफ बिल अगेन, इलेक्ट्रिसिटी बिल। एंड दिस ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि यही बताया था मैंने कि पहले तो लोग बाजरा, ज्वार, वेजिटेबल्स, ऑल दीज वेर ग्रोन, isn't it? All these are grown together in one field. एक फील्ड में ही बहुत सारे चीज एक साथ फार्मर्स लोग ग्रो करते थे, कितने इंटेलिजेंट हुआ करते थे वो लोग। बट आजकल क्या करते हैं, ज्यादा बेनिफिट चाहिए, लालच है ना, ज्यादा बेनिफिट चाहिए, बहुत कर्जा में है, ज्यादा बेनिफिट करूंगा तो कर्जा चुका लूंगा, तो क्या करते हैं, या फिर एक ही टाइप का क्रॉप ग्रो करेंगे, आइदर कॉटन, बिकॉज कॉटन इज मोर, दे आर गेटिंग मोर बेनिफिट फ्रॉम द कॉटन, है ना, तो कॉटन ही पूरा ग्रो करेगा, कॉटन ही कॉटन, या फिर वीट ही पूरा ग्रो करेगा, बिकॉज वीट एंड कॉटन प्लांट्स गिव्स, मींस वीट एंड कॉटन प्रोडक्ट्स गिव्स द बेटर बेनिफिट, बेटर प्राइस टू देम। ओके, इसलिए ये दो चीज ज्यादा ग्रो होता है। तो
अल्टीमेटली ज्यादा से ज्यादा खर्चा किया जा रहा है. कहाँ पे खर्चा कर रहे हैं? जहां पहले लोग पीपल वर यूजिंग काउ डंग, नाउ जस्ट कंपेयर. ओके, थिंक योरसेल्फ, कंपेयर करो. अर्लियर द फार्मर्स वर यूजिंग काउ डंग, नाउ द फार्मर्स आर यूजिंग. आई विल आस्क यू, हाँ, थोड़ा सोचो आप लोग. सपोज योर लेफ्ट हैंड इज ट्रेडिशनल मेथड, योर राइट हैंड इज मॉडर्न मेथड. Okay, your left hand, that means traditional method, farmer, traditional method of left hand, they are using organic manure, that means cow dung. Right hand, that means your modern method. Modern method, farmers are using expensive fertilizer, chemicals, fertilizer use कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं. सेकेंड डिफरेंस क्या है? ट्रेडिशनल मेथड, सेकेंड हैंड मतलब लेफ्ट हैंड, आप लेफ्ट हैंड घुमाओ तब आपको याद रहेगा. लेफ्ट हैंड, दैट मीन्स ट्रेडिशनल मेथड. They were farmers were using stored seeds which were organic and of good quality. And right hand, that means modern method के farmer लोग क्या करते हैं? They are buying hybrid seeds from the market which are easily attacked by insects and pests and needs more of water. है ना? कितना harmful हो गया. थर्ड क्या है? डिफरेंस क्या है कि ट्रेडिशनल मेथड में एज द फार्मर्स वेर यूजिंग organic fertilizers, using the stored seeds, so they never went to bank and all for taking loans, so no debt, no karza. But in modern method, right hand जो है modern method का farmer, they are buying seeds, they are buying electric motors, animals are replaced with tractors, then all these things are modern things. That is why they have to take loan after loan from the bank, and whatever the benefit they are getting, they have to waste it to repay their loan. No benefit at all. तो फोर्थ डिफरेंस क्या है? ट्रेडिशनल मेथड में farmers remained as farmer because they lived a simple life and happier life. Their quality of the soil was good. और मॉडर्न मेथड में क्या है? फार्मर्स का बहुत हाईटेक लाइफ उनको चाहिए ना, एकदम एडवांस लाइफ चाहिए, एडवांस मशीन एंड ऑल. तो उनका एंड दे आर ग्रोइंग सेम टाइप ऑफ क्रॉप, दैट इज व्हाई देयर क्वालिटी ऑफ सॉइल आल्सो डिग्रेडेड. फिफ्थ डिफरेंस क्या है? ट्रेडिशनल मेथड में फार्मर्स उनका जनरेशन आफ्टर जनरेशन दे रिमेन्ड एज फार्मर ओनली, एंड इन द मतलब वही फार्मर्स लोग अभी जनरेशन वो लोग मॉडर्न मेथड अप्लाई करना शुरू कर दिया. तो एज they underwent into loan debt and all, they were unable to repay the loan, कर्जा के ऊपर. So as a result, what happened, you know? Most of the farmers became truck drivers. Yes, most of the farmers became truck ड्राइवर्स. तो एटलीस्ट आप ये 5 डिफरेंसेस यू कैन कीप इन माइंड, है ना. बहुत इजी है ये चैप्टर, ज्यादा हार्ड नहीं है. बस ये ट्रेडिशनल मेथड एंड मॉडर्न मेथड का डिफरेंस ओनली इज देयर. वेरी इजीली, इफ 5 मार्क्स क्वेश्चन आल्सो कम इजीली, यू कैन फ्रेम इट योरसेल्फ. ठीक है. तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर अभी भी मैंने समझाया था कि इफ देयर इज अ फील्ड, है ना, and if we are growing multiple crops in that field, different types of crops, कहीं पे आपने सब्जी थोड़ा सा उगाया, ब्रिंजल, कहीं पे भिंडी, कहीं पे थोड़ा सा कॉटन, कहीं पे वीट, इस टाइप के वैरायटी ऑफ क्रॉप्स इफ यू आर ग्रोइंग इन द सेम फील्ड, व्हाट विल हैपन? एंड इफ यू आर ग्रोइंग ओनली वन क्रॉप, वन टाइप ऑफ क्रॉप द सेम फील्ड, लाइक सपोज ओनली क्रॉप कॉटन क्रॉप यू आर ग्रोइंग, है ना, सिर्फ कॉटन उगा रहे हो उस मिट्टी में, उस जमीन में, तो क्या होगा? यस, तो बिगेस्ट जो आपका थीम है, मतलब पूरा जो आपका इसी में आ जाएगा, पूरा चैप्टर का ये जितना भी मैंने समझाया ना, व्हाट इज द मेन, जो क्या है कि इफ द फार्मर्स आर ग्रोइंग डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप, दैट व्हाट इज इट कॉल्ड एज मल्टीपल क्रॉप्स इन द सेम फील्ड, देन number 1, I told you already, the vigority of the soil will be lost. Vigority means the quality, है ना. हर चीज में एक एनर्जी होता है, एक नेचुरलनेस होता है, मिनरल कंटेंट होता है, एक शक्ति होता है ना, सॉइल का भी एक उसमें मिनरल होता है, दैट इज vigority. That vigority of the quality of the soil will be maintained if you are growing multiple
क्रॉप्स, अगर बहुत तरह का, क्योंकि ब्रिंजल का न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट विल बी डिफरेंट फ्रॉम व्हीट क्रॉप, व्हीट्स nutrient requirement will be different from भिंडी, नो whatever different types of crops, सबका mineral requirement अलग अलग होता है. तो as a result what will happen, the soil will soil's vigority will remain as it is, खराब नहीं होगा. तो क्या होगा, आपको ज्यादा you don't have to use more of fertilizers also, isn't it? ज्यादा fertilizer यूज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा. तो क्रॉप प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा होगा, हेल्दी फूड होगा, उसका जो प्रोडक्ट है ना दैट विल बी हेल्दी एंड टेस्टी ऑल्सो. एंड जस्ट ऑपोजिट टू ईट, इफ यू आर ग्रोइंग ओनली वन काइंड ऑफ क्रॉप, सपोज कॉटन ही उगाया या फिर व्हीट ही उगाया, एक साल तो उग गया, उसको बिक्री कर दिया, सेकेंड ईयर भी आपने उगा दिया, चलो वो भी हो गया. And after that, slowly the soil will lose its vigority, उसका mineral content ही खत्म हो जाएगा. After that, what the farmers will have to do, they will again have to rush to the bank to get the loan money, they will rush to the market, they will buy artificial fertilizers, है ना, artificially plant को grow करने की कोशिश करेगा, crop production ज्यादा करने की कोशिश करेगा by adding chemicals, fertilizers, है ना. So soil का quality तो पूरा धज्जी हो जाएगा. So that is the main thing. So traditional method and modern method has a big difference. Actually, the traditional methods have changed to modern method nowadays, and since it has changed, many of the farmers have many of the farmers means they are under debt now. ठीक है ना, completely under debt, बहुत कर्जे में डूब जाते हैं.